जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, सभी का स्वागत है आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर जेके तिवारी हियर ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म द न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर। सभी का वेलकम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राम अयोध्या से। जी हुडा, रमेश, संजीव, सोनू, फिरोज, जितने भी लोग ज्वाइन कर लियो सभी को जय श्री राम है। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय माता दी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो पहले तो शेयर कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आवर सेशन को। योर गोल्डन टाइम हैज स्टार्टेड, इट हैज बिकम 8 hours 30 minutes। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। लास्ट 2 days से यू वर डूइंग विद simple questions for UPPGT and PGT, and in today's pitara you will have some more questions for EMRS, for NVS and for UGCNET as well. So you have to be prepared, you have to be alert, you have to give your answer very thoughtfully, very seriously and very beautifully. जी उपासना, मीरा, अजय, कविता, अपराजिता, नीनू जायसवाल, everyone good evening, good evening. Please do share the channel first, press the like button, right? share कर लीजिए, like कर लीजिए, doubts पूछ लीजिए, कोई query हो तो, and then only I shall start questioning. फिर शुरू करता हूं आपके क्वेश्चंस। आपको 1 मिनट का टाइम है, पहले पूछ लीजिए, राइट? पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये तो भाई मुझे भी नहीं पता अजय जी, जो मूवमेंट आपने लिख दिया है तो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी सर्च करूंगा तो बताऊंगा। थैंक यू अपराजिता, थैंक यू सो मच। जी मीरा, थैंक यू। आयुष्मान भव सुरेश, विश्व विजयी भव। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सेशन। नो डाउट, नो क्वेश्चन, नो क्वेरी। Okay, no doubt, no question, no query. Then the first question is going to appear on your screen. ग्रामर की क्लास संडे से शुरू होगी। आज अभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया है, शायद आपने देखा नहीं होगा। संडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट टेकिंग योर ग्रामर क्लासेस, राइट? वहीं से शुरू होनी है। सो अभी उस पे मेंबर्स भी कम हैं, थोड़ा और लोगों को शेयर करिए और लोग जुड़े। वैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो लोग जुड़ना शुरू करते हैं। कोई नहीं, संडे से मैं शुरू कर दूंगा, चाहे 2 लोग पढ़े, चाहे 5 या 50, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट संडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास। ऑलराइट, चलो, गुड इवनिंग एसजेड, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी इज रिटन बाय। Poems descriptive of rural life and scenery is written by who wrote the poem? And options are William Wordsworth, Robert Southey, John Clare, Thomas Gray. Poems descriptive of rural life and scenery. You have to tell the answer. आज हैंडसम लग रहा हूं? अरे भाई रोज ही हैंडसम रहता हूं, बस चश्मे चश्मे का फर्क है। थैंक यू सो मच। सब कुछ आज ही पूछ लोगे, टाइमिंग तो संडे को ही बता पाऊंगा, है ना? सी कडिका सेन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदे, द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, जॉन क्लेयर और थॉमस ग्रे। विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज, क्या होगा ये आपको बताना है। ओनली 2 to 3 स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड सो फार। जी नरेश जी को नमस्ते, चेतना को नमस्ते, सपना को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आप आइए, समझ लिया करिए मेरा नमस्ते आपको पहले से ही। आज जो सेंड हो गया है आपको रिसीव करना होता है, बस ब्लू टिक लगा दिया करिए, आपका काम हो जाएगा। आइए, पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी वाज पब्लिश्ड इन 1820। All right, first clue, and this is the first collection of poetry of John Clare. First collection of poetry by John Clare, published in 1820. Right answer to the question is C. Right answer is C. वर्ड्सवर्थ की पोएम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, नॉट डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज द पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज द लोको डिस्क्रिप्टिव पोएम है वो। ऑलराइट जी शशि, आज राइट टाइम है।
वेरी गुड इवनिंग जी अमृता जी, नमस्ते। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। योर फेवरेट एरिया, योर फेवरेट एरिया। Hemingway's novel A Farewell to Arms is divided into. Hemingway, Ernest Hemingway was an American novelist and short story writer, and he was the Nobel winner, right? Nobel winner थे वो, और Nobel, he was given Nobel Prize for his novel, or which novel? For the novel The Old Man and the Sea, and his novel is A Farewell to Arms, और एक ऐसे नॉवल है where he criticizes the futility of war, war futility है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। and which one is the right option? in how many books A Farewell to Arms is divided? जी श्रुतिका नमस्ते। in how many books A Farewell to Arms is divided? 2 books, 3 books, 4 books, 5 books। ये आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीजीटी देन यू मस्ट बी नोइंग द आंसर एज हेमिंगवे इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSSB, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NVS, EMRS और फॉर नेट ओनली, तो भी आप सबको इसका आंसर पता होगा। अपार्ट फ्रॉम यूपीपीजीटी हेमिंगवे इज एवरीवेयर। जी सुबोध, स्मिता जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्वाति, राइट। नरेश जी को भी गुड इवनिंग, राइट। देखिए राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज 5 बुक्स, राइट। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स। 5 बुक्स में डिवाइडेड है अ फेयरवेल टू आर्म्स। चलो एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। अ फेयरवेल टू आर्म्स वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर द नॉवेल फेयरवेल टू आर्म्स वाज पब्लिश्ड? इसी का आंसर कर दो, सिंपल वाला क्वेश्चन है। जी मौसमी जी गुड इवनिंग। कोई बात नहीं नीनू जायसवाल, आपको आंसर नहीं आता, अब तो आ गया ना, अब तो डाउट नहीं रह गया ना। नाउ आंसर इज वेरी मच फाइन, वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा यू विल क्लिक द राइट आंसर। तो मैं तो इस पर काम करता हूं ना, आप भी इसी पे काम करिए। हम तो सीखने के लिए आए हैं, ना आना कोई खराब बात थोड़े ना है, और नहीं आता तो ही तो आप हमारे चैनल पे आए ना। अगर आता होता तो आप भी एक ना चैनल शुरू कर देते मेरे टाइप का, है ना। आप नहीं आता, इसमें कोई खराब बात नहीं है। हाँ आज के बाद आएगा ये अच्छी बात है। ऑलराइट जी गुड इवनिंग, योर फर्स्ट क्लास लाइव विद यू, बट आई सी योर कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन अ बिट डिफिकल्ट, अ बिट टिपिकल, और ये हो सकता है कि आपको ना पता हो, राइट। Panopticism is the title of a chapter in a well-known book by Michel Foucault. Right? Right answer to this question is Michel Foucault. Michel Foucault की एक बुक है और उसी का एक चैप्टर है Panopticism. Panopticism is a literary term and it was coined by Jeremy Bentham. जॉमी बेंथम का नाम आपने सुन रखा है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूटिलिटेरियन सोसाइटी। यूटिलिटेरियनिज्म के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे और उन्हीं का टर्म है पैनॉप्टिसिज्म। एंड मिशेल फोको हु वाज द फ्रेंच फिलोसोफर, राइट, जो एक फिलोसोफर थे, राइट, उन्होंने टर्म को क्वाइन किया था। एंड उस टर्म को क्वाइन किया था, सॉरी उन्होंने यूज किया था इस टर्म को मिशेल फूको ने। मिशेल फूको की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो बुक है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, राइट। ही वाज पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो। तो राइट आंसर इज सी, इससे ज्यादा यू डू नॉट नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रीड एंड क्लिक द आंसर। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल शेयर नहीं किया है प्लीज डू शेयर, राइट, शेयर कर दीजिए सो दैट अदर्स कुड ज्वाइन। The lines, she was a worthy woman all her life. She was a worthy woman all her life. Husbands at church door she had 5 are an example of. These are the lines from Prologue to Canterbury Tales, and in Prologue to Canterbury Tales these lines appear, but this is not the question कि from which poem these lines have been taken.
question is an example of blank verse, clarive, heroic couplet or free verse. You have to give the right answer. I don't avail myself for the live classes. Why? She was a worthy woman all her life. Right? She was a worthy woman all her life. Husbands at church though she had 5. जी दिख रहा है, कमेंट्स बिल्कुल दिख रहे हैं. मासूम आदि नमस्ते. सी अपराजिता, मौसमी, स्मिता, रीता, शशि, शाबाश शाबाश, वेल डन. कम ऑन. नरेश, मासूम आदि, एसजेड, मीरा सागर, प्रतिमा यादव. देखिए ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपने कभी नहीं सुना है, यू नो द आंसर. यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. राइट? द राइट आंसर इज हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट इज द राइट आंसर. कैसे? देखिए, लाइव एंड 5, these two lines rhyme. Two words in fact rhyme. Live and 5, they are the rhyming words. And blank verse की lines rhyme नहीं करती, इसलिए ये नहीं होगा. फ्री वर्स की लाइंस राइम नहीं करती, इसलिए ये नहीं होगा. इसको तो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो जो सुना है उसी पे लगाओगे ना. और जो आपने सुना है दैट इज हीरोइक कपलेट. और पूरी की पूरी कैंटरबरी टेल्स हीरोइक कपलेट में ही लिखी है, अपार्ट फ्रॉम 2 स्टोरीज एंड 2 आर इन प्रोज. बाकी जितनी है वो सब के सब लिखी हुई है हीरोइक कपलेट में. राइट आंसर इज सी हियर. एंड दूसरा तरीका, हाउ टू आइडेंटिफाई द लाइन्स, ये भी आपको आना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्शन दिस ईयर. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 5. Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? करिए आंसर. I am a housewife from Odisha. This is time for prepare dinner and serve all the family. Okay, that is your daily routine, that is your daily duty. Do the duty beautifully and my classes will remain on my channel. You can join anytime and watch all the questions, all the sessions. Today I had uploaded a video, the second part of novels. First part I had uploaded one day, second was uploaded today, and the third and final part on kinds and types of novel will be uploaded tomorrow. Right, tomorrow upload hoga. Please do watch those videos. They will help you answer your questions. Right, literary terms के जो questions हैं वहां आपको उससे मदद मिलेगी, उससे help मिलेगी. Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare? Everybody knows the answer and everybody has clicked the answer. दिल की नहीं दिमाग की सुनी गलत हो गया. दिल की सुना करो, दिल वाले की नहीं, है ना. George Eliot was a realist, Victorian novelist. Virginia Woolf was a modern novelist. Irish Murdoch is modern novelist. And Frances Burney, she was also a novelist. And who talks about the plight of Shakespeare's sister? And it is Virginia Woolf. Virginia Woolf, in her book, A Room of One's Own. In her book, A Room of One's Own, in this book, she imagines Shakespeare having a sister. And the name of Shakespeare's sister is Judith Shakespeare. And Virginia Woolf says that had Shakespeare had a sister, Judith Shakespeare, she would not have got the same opportunity that Shakespeare was given. She might not have been so successful as Shakespeare were. क्यों ना होती? Because उसको opportunity ही ना मिलती advancement की, पढ़ने की, घर छोड़ने की. This was the argument of Madam Virginia Woolf in A Room of One's Own. And here she talks about a woman requires 2 things if she
wants to become a writer, she wants to become a novelist. And what are the two things? A room of one's own means privacy, and second is financial security, financial freedom. अगर ये दो चीजें हैं, she could become a novelist. All the girls who have joined the class, they are on the verge of financial security. Alright, they will get financial security once they get selection. Right, बस लगे रहिए, definitely you will get selection. आज ही पढ़े थे, चलो आज ही पढ़े थे और आज ही पेपर में आ गया ना. How beautiful. Question number 6. Read and click. The question is from Charles Dickens. Dickens's novels are called Newgate novels. They are called so because Dickens adulates in these novels the careers and adventures of criminals. Which one is the right answer? Charles Dickens, very famous Victorian realist, Victorian novelist, right? What is the answer? Newgate novels कैसी novels होती हैं? Newgate novels are the novels, right, that eulogize, appreciates the criminalization. Criminalization पर जो बात करती हैं. Newgate was in fact the name of a prison. एक जेल का नाम होता है and Newgate prison एक जेल है और वहां पर criminals होते हैं. तो ऐसे novels जो criminalization को appreciate करती हैं उनको Newgate novels कहा जाता है. Statement number 1. Dickens's novels are called Newgate novels. Yes, because in one of his novels he talks about the criminalization, जिसमें character होता है artful dodger, जिसमें character होता है Fagin. What is the name of the novel? कौन बताएगा? Oliver Twist. Right? They are called so because Dickens adulates. Adulates माने प्रशंसा करना, appreciate करना. Dickens adulates in these novels the careers and adventures of criminals. इन novels में Dickens criminal के career को, उनके adventure को appreciate करते हैं. Right? Assertion and reason. Option A says A and R are true. Both the statements, assertion and reason are true, and reason is correct explanation. A and R are true, but R is not the correct explanation. And A is true, R is false, A is false, but R is true. ये दोनों तो incorrect. Out of the two you have to click the right answer, and right answer to the question is A. Right? Dickens's novels are called Newgate novels. और क्यों कही जाती हैं? Because Dickens adulates in these novels the careers and adventures of criminals. A is correct and R is the right explanation, correct explanation. Right? आंसर कौन सा क्लियर हुआ? आंसर क्लियर हुआ ए. जिसने ए आंसर दिया है, he or she or they are right, but those who have clicked answer B, they need to understand the question once again. All right, may I proceed? बढ़ सकता हूं ना आगे? If you allow me, अगर इजाजत हो तो proceed करें. Question number 7. Which of the following writers does not belong to the group the university wits? University wits कौन नहीं है? John Lilly, Thomas Nash, George Peele, Thomas Kidd. Who is not one of the university wits? Simple question, very simple. Question number 7. Yes, Subodh, Mashum Ali, Maushmi Khatun और माशूम आदि, अजय मिश्रा, बुशरा स्मिता, मौसमी फिरोज, ज्ञान रंजनी, यही नाम है ना, ज्ञानान रंजनी, शाहू हुडा, शशि रमेश, स्वाति सत्येंद्र, मीरा
Rita, SZ, Naresh, Hemlata, Rinki. Very serious question, na? Yes, sometimes serious questions are asked and we should always be ready for such serious questions. सबके लिए तैयार होना चाहिए. And if we are in the battlefield ना, then we do not think, yeah, we should not think of missiles. We should always be ready to crush the missile. हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? हर बार आपका नाम गलत कर देते हैं. अरे वो आई मुझे ना पता नहीं कैसे अली दिख जाता है कभी कभी. मासूम आदि यही नाम है ना? क्या मासूमियत है. और आपने वही मासूमियत वाली एक पिक्चर भी लगा रखी है नाम के साथ. चलो आंसर इसका सबका क्लियर है. थॉमस किड वाज नॉट द स्टूडेंट ऑफ ईदर ऑफ द यूनिवर्सिटी. दोनों में से किसी के स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए ये यूनिवर्सिटी में नहीं आते. बट समटाइम्स इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप. और कब कंसीडर किए जाते हैं? अगर यहां पर थॉमस नैश की जगह पर एक और नाम दे दिया जाता, बेन जॉनसन, राइट? बेन जॉनसन या विलियम शेक्सपियर. तो बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर आंसर हो जाता और तुरंत थॉमस किड ग्रुप में इंक्लूड हो जाता. थॉमस किड वाज द कंटेम्पररी एंड थॉमस किड्स dramatic techniques were very much similar to those of Christopher Marlowe and other university wits. इसलिए उनको यहां पर रख देते हैं. Right? Next, so easy questions. Next question will always be easy or check. अगला क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है. जी शेजल नमस्ते, कैसे हो? Which of the following characters of Webster's White Devil utters the memorable words? White Devil and the Duchess of Malfi. The White Devil and the Duchess of Malfi. The White Devil and the Duchess of Malfi. These two are the plays by Webster, John Webster. And John Webster was a Jacobean tragedian. Right? Jacobean period के हैं John Webster. And the White Devil and the Duchess of Malfi both are set in Italy. दोनों ही इटली में सेट है. And the White Devil of the play is Vittoria Corombona. Vittoria Corombona is the title character of the play. And Cardinal जो character है, Cardinal appears in the play. In which play? He appears in the Duchess of Malfi. Cardinal and Ferdinand are the two sisters of Duchess of Malfi. और यहाँ पे जो right answer है, oft gay and honored robes, those tortures try, we think caged birds sing when indeed they cry. हमको लगता है कि जिस बर्ड को हमने पिंजड़े में बंद कर रखा है वो गाना गा रही है. इनफैक्ट वो गाना नहीं गा रही होती, वो क्राई कर रही होती है, वो रो रही होती है. एंड दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय फ्लैमिनियो. राइट, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय फ्लैमिनियो. राइट आंसर इज डी. ये यूजीसी का PYQ है. सो आपके लिए था NVS, EMRS एंड UGCNET के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Simple question. All great literature is at bottom a criticism of life. Who said? All great literature. Yes, Archit, that was a tough question, I think. And this is also not simple question if you reply positively. And the question जिसका आंसर आपको पता है, that is the simplest question. और जो आंसर जिसको आपको नहीं पता है, that is the toughest question. बाकी there is nothing either tough or easy. Right? It is the state of mind. It is your preparation. Who describes कि all great literature is at bottom a criticism of life. सारे great literature criticism of life होते हैं. And ये simple question you could say. And this statement was given by the Victorian poet, critic and essayist Mr. Matthew Arnold in his work The Study of Poetry. All right, next question. Question number 10.
चलो ये देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग is not a Jewish American novelist? Jewish American novelist. Yes, I always lie. I am a great liar. Who amongst the following is not a Jewish American novelist? Jewish American novelist कौन नहीं है? J.D. Salinger, Henry Green, William Faulkner, Philip Roth. शाबाश, वेल डन आंसर, शाबाश। तो बोथ क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश अजय मिश्रा, नरेश, सुबोध, धर्मपाल, श्रुतिका, एसजेड, स्मिता वर्मा, नीनू जायसवाल, मासूम आदि, पीके, मौसमी खातून, फिरोज खान, स्वाति चौधरी, रीता राज। सिंपल क्वेश्चन था ना। मीरा सागर, वेरी नाइस। शशि दुबे, absolutely well done, come on सिंपल क्वेश्चन है, शाबाश। विलियम फॉकनर, मीरा सागर, शशि दुबे, प्रतिमा यादव, वेल डन, गुड लक, शाबाश, क्लैपिंग, कम ऑन। हुड्डा ताहिर, अशोक कुमार मौर्य, हुड्डा ताहिर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। रमेश यादव, अशोक कुमार मौर्य, राइट। दिस क्वेश्चन लुक्स सिंपल but it's not simple. The right answer has been searched by Sapna and now the right answer is Henry Green. Henry Green was not a Jewish American. Rest of the three are Jewish American, and the problem was with you that you had heard the name of William Faulkner and you collected William Faulkner. If you are going for UPPGT, then you must prepare the biography of William Faulkner. राइट, विलियम फॉकनर की बायोग्राफी प्रिपेयर करिए, अदरवाइज यू विल क्लिक द इनकरेक्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन इज, कौन सा है राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन इज हेनरी ग्रीन। ही वॉज नॉट ज्यूइश अमेरिकन। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन, गलत आंसर। ओके, ओह, जब बोले कि वेल डन तो समझ जाइए कि कुछ पंगा जरूर है। वाह हुडा, इतना एक्सपीरियंस आपने ले लिया ना इतने छोटे से ड्यूरेशन में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर में चीटिंग की गई है ना। हाँ, ऐसे आंसर चीट करने के लिए आ जाते हैं पेपर में। Which among the following plays by Christopher Marlowe has epic features? Epic feature क्या होता है? Epic feature means grand narrative, grand scale, huge subject matter, objectivity, bombastic language, right? किस प्ले का ये कैरेक्टरिस्टिक है? एपिक प्ले कौन सा है? डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकेंड, हीरो एंड लिएंडो और टैम्बरलिन। Which among the following plays by Christopher Marlowe has epic features? शाबाश, अजय, अर्चक, सुबोध, रमेश, सपना, नरेश, मौसमी, स्वाति, उपासना, एसजेड, मीरा, श्रुतिका, ज्ञान रंजनी, धर्मपाल, हेमलेथा, मनीषा, हुड्डा। मैंने बिल्डर नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा जी। प्रॉस्पी के, चले बता दे आंसर ना। एपिक फीचर वाला जो प्ले है दैट इज टैम्बरलिन द ग्रेट। Tamburlaine the Great has the epic features because the hero of the epic is very brave like Tamburlaine. Tamburlaine wants to conquer the world, right? Tamburlaine is a character of potential. देखिए अर्चक, question was easy ना? Your answer is incorrect, but according to you I am a liar. According to you I am a liar, but your answer is incorrect, right? Tamburlaine is the play that has epic features, right? It deals with grand scale, big subject matter, and Tamburlaine
फ्रॉम रैग टू रिचेज स्टोरी, फ्रॉम द शेफर्ड टू द वर्ल्ड कंकरर, ये जो स्टोरी है दैट इज एपिक फीचर। राइट आंसर इज डी, टैम्बरलिन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Sir, Fopling is a character. Sir, Fopling is a character in which play? Wycherley is the plain dealer, Congreve the way of the world, Ethers the man of the mood, and Devenants the platonic lovers. ये तो मेरी गलती है कि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है तो आप क्यों पढ़ें, है ना। टफ क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ेंगी, है ना। चलो, सर Fopling is a character in which play? Wycherley is the plain dealer, Congreve the way of the world, Ethers the man of the mood, and Devenants the platonic love. All the four are restoration dramatists. All the four are restoration dramatists. And all the given plays here are the example of comedy of manners. Right, सारे comedy of manners के example हैं जी। जूली, प्रतिभा, good evening. And the man of the mood. The man of the mood was a play by George Ethers and it was the subtitle. Subtitle इसकी क्या थी? Sir Fopling Flutter. Sir Fopling Flutter was the subtitle of the play The Man of the Mood. Right, subtitle जो थी The Man of the Mood थी, and the right answer to the question is what? Right answer to the question is C. Ethers the Man of the Mood was subtitled as Sir Fopling Flutter, and Fopling the character appears in that play only. All right, चलो next question. हुडा कह रही थी कि कुछ मिल रहा है आपको जो इतने ऐड आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ क्या कोई न्यू लाइसियम का भी ऐड आ रहा है? मेरा अपना पर्सनल ऐड है, भला आप तो ऐसे बात कर रहे हो। अगर मेरा पर्सनल ऐड होता ना तो शायद एक भी ऐड ना आता। ये चैनल वालों का ऐड है और उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, मैंने आपको एक दिन और भी बताया था कि मुझे मिलियनियर नहीं बनना है, मुझे कोई शौक नहीं है। ईश्वर जो है ना दाल रोटी भर के दे देता है, वो बहुत है। मुझे न तो मिलियनियर बनना है, न तो मुझे 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, और न तो मुझे बंगले में रहना है, किराए के घर में रह रहा हूं, ठीक है। और इस ऐड से 2-4 हजार आ भी जाएगा ना तो उससे कुछ बनना बिगड़ना भी नहीं है। तो राइट, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, ये कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी। और वो भी देखिए ना, वो वही ऐड आता है जो चैनल चलता है, जो चैनल दिखता है। तो जब आप लोग दिखते हो तो उनको लगता है अच्छा इसको ऐड दिखाओ। और इस समय भी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो उनका ऐड आता होगा, यही मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी पता नहीं है, मैंने तो सेटिंग में भी कोई छेड़खानी नहीं करी है, पता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हु फेमसली सेड 3, अच्छा पिछले वाला आंसर कर दिया था क्या मैंने? हाँ जी। हु फेमसली सेड दैट 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on. 3 or 4 families in the country village is the very thing to work on. 3-4 परिवार अगर मिल जाए ना किसी गांव में तो एनएफ है काम करने के लिए। जी दीपिका, थैंक यू सो मच। हिमाचल प्रदेश से भी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। व्हाट अबाउट यू? इतने दिन बाद आप कैसे याद आ गई?
who famously said 3 or 4 families in country village is the very thing to work on. 3 or 4 families are enough if you want to write something. And अगर आपने इनमें से किसी को पढ़ा होगा ना, तो आप जानते होंगे कि कौन है जो ओनली फैमिली बिजनेस पर टैकल करता है. And that novelist is Jane Austen. In Jane Austen's novel Pride and Prejudice, you see that there are one family, that is the family of Mr. whom? Bennet family. Second family is Bingley's family. और एक फैमिली और है, 3 फैमिली मिलकर के पूरी नॉवेल ही लिख दिया. राइट, तो इसका जो आंसर है वो है डी, जेन ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट था. क्वेश्चन नंबर 14. Ekmifuna is a character in the novel. Ekmifuna is a character in the novel. नाम से आपको लग रहा है ना कि ये कोई इंग्लिश नेम नहीं है. It is an African name. And in which play, in which novel he appears? The novel is Things Fall Apart. Things Fall Apart is the novel written by Chinua Achebe. Chinua Achebe was an African and his first novel was Things Fall Apart, and he wrote a trilogy called African Trilogy, and the first novel of African Trilogy is Things Fall Apart. Ekmifuna is a wrestler in the novel. Right, एक community से होता है, Igbo community से. Next question. A food consisting of a strong syllable followed by a weak syllable is called. A strong syllable followed by a weak syllable is called. क्या होता है? ट्रोकी, आयम्बिक, स्पॉन्डी और टर्जराइमा. जी, Okonkwo was wrestler. Yes. In Rajasthan, net balance and mobile are free. इलेक्शन ईयर है, कुछ भी हो सकता है. Right answer to the question. Strong syllable means stressed syllable. Stressed syllable followed by unstressed syllable. This is the just opposite of iamb. Iamb का just opposite है, and iamb का just opposite is trochee. Right answer. Next question. 16. What is it that Chaucer focuses on in the depiction of wife of Bath in the Canterbury Tales? Wife of Bath in the Canterbury Tales is a character, and which aspect of her character is focused by Geoffrey Chaucer? किस पर फोकस किया गया है? मीकनेस, डिफायंस, चेस्टिटी और एक्सपीरियंस. You would have read prologue to Canterbury Tales in your MA previous. Right, MA previous में आपने पढ़ा होगा prologue to Canterbury Tales, and वही का ये आंसर है. And Geoffrey Chaucer talks about her defiance. Right, Geoffrey Chaucer talks about her defiance in prologue to Canterbury Tales. Next question. Put the following books of Pope in a sequence of publication. Answer the question with the help of code given below. The Dunciad, The Rape of the Lock, The Essay on Man,
the essay on criticism. These all the works of Alexander Pope, and you have to match, you have to set them chronologically. फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17. शाबाश. First work of significance by Alexander Pope was Essay on Criticism, published in 1711. An Essay on Man was published in 1733-34, and The Rape of Locke, published for the first time in 1712, and then the revised and expanded version was published in 1714, and the Dunciad was published in 1726. Now click the answer. First work, An Essay on Man, means the last work will come first, and the last work will come first. It means A, C and D are incorrect. This is the right answer. ये होगा क्या? कौन सा आंसर आएगा? नहीं, ये नहीं होगा. पहले आएगा नंबर 4. तो पहले आएगा नंबर 4. कहां पे है नंबर 4? नंबर 4 पहले है सी ऑप्शन. फिर आएगा नंबर 2 द रेप ऑफ द लॉक. फिर आएगा डंसियार्ड, और फिर आएगा एसे ऑन मैन. ऑप्शन इज सी. सी इज द राइट आंसर. ऑलराइट, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Dinah Morris is a character in George Eliot's novel. What was the real name of George Eliot? What was the real name of George Eliot? George Eliot का real name क्या है? Real name of George Eliot was Mary Annie Evans. Mary N. Evans was the real name of George Eliot. She was a woman. She was an agnostic. She was an atheist. Right? She was an agnostic. She was an atheist. And she was living with a married man. Right? And बगावत कर दिया था उन्होंने घर से. She changed her name. Right? Mary N. Evans से she became a फीमेल से मेल नेम जॉर्ज एलियट एडॉप्ट कर लिया था. द नॉवेल एडम बीड, इन विच हु अपीयर्स? डायना मॉरिस. पक्का ना? कोई और तो ऑप्शन नहीं है? सोच लीजिए. एडम बीड में डायना मॉरिस अपीयर करती है. And Dinah Morris was based on the aunt of Mary Annie Evans, Elizabeth Evans. Elizabeth Evans ने स्टोरी बताई थी जॉर्ज एलियट को, मैरी एनी इवांस को, and she based her novel on that story. मेथोडिस्ट की बात आती है, मेथोडिज्म की बात आती है एडम बीड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Booker Prize is awarded by a panel of judges to the best novel by a citizen of the United Kingdom, the British Commonwealth or the Republic of Ireland, the United Kingdom or the British Commonwealth,
the United Kingdom or the British Commonwealth or the Republic of Ireland. To whom the Booker Prize was given. Booker Prize किसको दिया जाता था? This is the question. Question number 19. The prize was given to whom? Ji Sangeeta, good evening. Initially, the prize was given to the British Commonwealth. British Commonwealth को initially prize दिया जाता था, and along with British Commonwealth, Republic of Ireland को भी prize दिया जाता था. The British Commonwealth or the Republic of Ireland, but now the prize is open for all countries. सबके लिए open है. So right answer was B initially. The British Commonwealth or the Republic of Ireland सिर्फ इनको दिया जाता था. But now it is open to all. Now the Booker Prize can be given to anyone. Right? किसी को भी दिया जा सकता है, irrespective of their countries. Question number 20. A curtal sonnet consists of. A curtal sonnet consists of. How many lines are there in a curtal sonnet? Curtal sonnet में कितनी lines होती हैं? ये question है. How many lines are there in curtal sonnet? 11, 12, 13 or 14? How many lines are there in curtal sonnet? Curtal sonnet was invented by whom? Curtal sonnet was invented by a Victorian poet. एक Victorian poet ने curtal sonnet को invent किया था. And the real sonnets कितनी lines के होते हैं? 14 lines के. And 14 lines का 3/4 होता है curtal sonnet. And 3/4 होता है 10.5 lines. And 10.5 means 11 lines. Answer is A. 10.5 lines का होता है curtal sonnet, invented by Gerald Manley Hopkins. Right? Gerald Manley Hopkins का invention है curtal sonnet, and it consists of 10.5 lines. So right answer is A. 21st. ये आज के ही क्वेश्चन है. If you have watched today's video, the unfortunate traveler has been authored by. Unfortunate Traveler has been written by Robert Greene, Thomas Delany, Thomas Nash, Thomas Lodge. The Unfortunate Traveler is said to be the first picaresque novel. First picaresque novel है, and the subtitle of the novel is what? Subtitle of the novel is The Life of Jack Wilton. Picaresque novel है, and the picaresque novel was written by Thomas Nash. This is the right answer. Right answer is C. Thomas Nash wrote the novel The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton. First picaresque novel in England. इसको कहा जाता है. Right answer is C. All right. Next question पर आते हैं. That is question number 22nd. Who among the following was not the practitioner of Jacobean tragedy? Jacobean tragedy का practitioner कौन नहीं है? John Marston, John Webster, Thomas Middleton, George Villiers. Who is not the practitioner of Jacobean tragedy?
क्वेश्चन नंबर 22। बहुत कठिन है क्या क्वेश्चंस? बोर हो रहे हो? क्वेश्चंस कठिन नहीं है। क्वेश्चंस आपको आते ना हो ये भले ही हो सकता है, बाकी क्वेश्चन के टफ और इजी का कोई पैरामीटर नहीं है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तुक्के में सही होते हैं, तुक्के में नहीं सही होते वो आप कहीं ना कहीं सुने ही होते हो और आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़े होते हैं वो, और अनकॉन्शियस माइंड से निकल करके और वो कॉन्शियस पर आते हैं और आपका आंसर क्लिक करवा देते हैं। राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर है ए, जॉर्ज विलियर्स वॉज नॉट अ जैकोबियन ट्रेजेडियन। बाकी के सारे आपके सुने सुनाए नाम हैं, बाकी सब जैकोबियन ट्रेजेडियंस हैं इस क्वेश्चन में। द ऑथर ऑफ नेशन एंड नरेशन। नेशन एंड नरेशन एक बुक है। नेशन एंड नरेशन इज अ बुक बाय एन इंडियन। इतना आपको क्लू दे देता हूं, राइट। एंड हु रोट द बुक नेशन एंड नरेशन। एंड अगर इंडियन की बात करें तो यू विल एलिमिनेट द टू ऑप्शंस। नाउ टू इंडियंस आर लेफ्ट, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक एंड होमी भाभा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर Archak Gurai's answer is incorrect. Naresh's answer is correct. Nation and Narration is a book written by Homi Bhabha. Homi Bhabha is a post-colonial critic. Post-colonial critic है वो, और उनकी बुक है Nation and Narration. And according to him, nation is imagination. Nation is imagination. होमी भाभा की ये बुक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अर्चक आपका आंसर गलत है। वाई इजी क्वेश्चन? बिकॉज योर आंसर इज इनकरेक्ट। यू इवन डू नॉट नो द आंसर ऑफ इजी क्वेश्चन। दैट वाई आई ऑलवेज गिव इजी क्वेश्चन, बट आंसर जो है वो गड़बड़ हो जाता है और आप हमारे आंसर को मानते भी नहीं हो। ये आपकी यूनिकनेस है ना। चलो कोई बात नहीं। नेशन एंड इमेजिनेशन बाय होमी भाभा। क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following novels has a great impact on the formal experimentation in contemporary fiction? बताओ, which of the following novels has a great impact on the formal experimentation in contemporary fiction? Whether the question is easy or tough, ये आपका मामला है और आंसर करिए। कौन सी नॉवेल है? फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन। थॉमस नासेस द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, हेनरी फील्डिंग स्टॉर्म जोन्स, लॉरेंस स्टेंस ट्रिस्ट्रैम शैंडी, सैमुअल रिचर्डसन पामेला। विच आंसर इज राइट आंसर? राइट, विच आंसर इज द राइट आंसर? विच नॉवेल इज नोन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन? एंड द नॉवेल दैट इज नोन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन वो कौन सी है? Babisha Kohli, thank you so much, and I hope today it's your first live class with me, or it's your first comments, right? Thomas Naski novel, The Unfortunate Traveler, that is a picaresque novel, and this novel is not known for formal experimentation and its impact on contemporary novel. The right answer to the question is C, that is Lawrence Stern's novel Tristram Shandy. The full title of Tristram Shandy was The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Life and Opinion of Tristram Shandy, Gentleman. And in the third book of the novel, he himself is born. Third book में वो पैदा होता है, and the novel is known for many reasons. The novel was completely odd, and there are techniques that were later exploited by the postmodern novelist. And Dr. Samuel Johnson had criticized the novel. उसको criticize करते हुए कहा था क्या कि nothing odd will do long. Nothing odd मतलब the novel was not written in the very conventional way. Nothing odd will last long, and Tristram Shandy did not last.
ये स्टेटमेंट था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, एंड दिस स्टेटमेंट वाज ऑन ट्रिस्ट्रैम शैंडी, दैट इज अ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन इन कंटेम्पररी फिक्शन के इंपैक्ट के लिए जिसको आप जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th repeated question for you. The phrase only connect is associated with. Okay, you watch the recorded video, that is also great. Only connect is associated with D.H. Lawrence, James Joyce, E.M. Foster or Virginia Woolf. किससे associated है only connect? Only connect is an epigram. किसका epigraph है only connect? Only connect is the epigraph of a novel Howard's End. Howard's End ये नॉवेल है और इसी का एपिग्राफ है only connect, and the novel was written by E.M. Foster. The novel was written by E.M. Foster, Edward Morgan Foster, and this is a repeated question for you. And only connect means connection of head and heart. Head and heart का connection जो है वो only connect है. Right answer is C. All right. Next question. 26. Which of the following books is by Margaret Atwood? Margaret Atwood is a Canadian novelist. Margaret Atwood is a Canadian novelist, and she is one of the few who won the Booker Prize 2 times for 2 novels. 2 novels के लिए बुकर प्राइज मिला है मार्गरेट एटवुड को। एक नॉवेल थी उनकी द हैंडमेड्स टेल, और फिर उसकी सीक्वल आती है द टेस्टामेंट, फॉर विच सी गॉट द बुकर प्राइज फॉर 2019। राइट, उसके लिए बुकर प्राइज मिला है। एंड पूछा है कि इसमें से कौन सी बुक मार्गरेट एटवुड की है। मार्गरेट एटवुड की जो बुक है दैट इज एडिबल वीमेन। राइट, एडिबल वीमेन, this is the book by Margaret Atwood. The book Stone Angel was written by another Canadian, और उस another Canadian का नाम था मार्गरेट लॉरेंस। Margaret Lawrence wrote the book The Stone Angel. No Fixed Address was written by Susan Nielsen. Nielsen, and Half Breed was written by Maria Campbell. Right, and The Edible Woman was written by Madam Margaret Atwood. So real answer is C. All right, next question. 27th. The expression murderous innocence is an example of. Murderous innocence is an example of oxymoron, zeugma, chiasmus और pun. किसका example है murderous innocence, and from which work the phrase murderous innocence has been taken? किस play से murderous innocence लिया गया है, from which play, and what figure of speech has been used here in question number 27. प्रदीप सोलंकी, रीता, प्रदीप, अजय मिश्रा, सोनू, जूली, इंग्लिश प्रॉस्पीके, प्रतिभा धर्मपाल, श्रुतिका हुडा, शिब्बू, मीरा, मौसमी खातून। शाबाश। राइट आंसर इज A. Sir, how can I get more knowledge just like you? Please give some key points for us. ये भी सही क्वेश्चन है बाबिसा। If you want to be like me, then you have to be with me. Right? You have to work hard with me.
मेरे साथ हार्ड वर्क करिए, आपको भी सारी चीजें आ जाएंगी. नथिंग इज इम्पॉसिबल. मर्डरस इनोसेंस, द फ्रेज इज टेकन फ्रॉम द प्ले हैमलेट. हैमलेट की लाइन है, हैमलेट का फ्रेज है मर्डरस इनोसेंस, एंड दिस इज ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट साइड बाय साइड. टू अपोजिट वर्ड आर पुट साइड बाय साइड. मर्डरस भी है और इनोसेंस भी. ये रियल एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन का. आंसर इज ए. राइट, सबका आंसर सही है. ये 28. Read the following statement and the reason given for it, and then choose the right answer. Othello killed Desdemona. No doubt, killed Desdemona, then killed because Desdemona committed infidelity. This is the reason. Both A and R are true, and R is the correct explanation. Both A and R are true, but R is the correct explanation. A is true, R is false. A is false, but R is true. बोलिए, which one is the right one? Desdemona committed infidelity. किया था क्या commit Desdemona ने? Desdemona didn't commit infidelity. She was accused of. उसको सिर्फ accuse किया गया था. And Desdemona was killed by Othello. First sentence is correct, but the second sentence reason is incorrect. Right? A is correct, but R is false. This is the right answer. Right answer is C. A is true, R is false. Question number 29. The Enlightenment believed in the universal authority of. Enlightenment believed in the universal authority of religion, tradition, reason, or sentiments. Holy. Enlightenment. Enlightenment is entire age. Age of enlightenment, Augustan age. Right? ये सब एक एज का नाम है और आंसर बताना है. Religion, tradition, reason, or sentiments. When you are enlightened, जब आप enlightened होते हो ना, तो enlightening का काम किसका है? Enlightening का काम reason का है, religion का नहीं. Right answer is C. Right, enlightenment means power of rationality. Right answer is C. Question number 30th. Which of the following works of John Milton is an elegy? Zeugma is the figure of speech where two things are put with the help of one verb. एक वर्ब से दो चीजें बताई जाती हैं, उसको ज़ेउग्मा कहते हैं. आएगा एग्जाम्पल तो क्लियर कर दूंगा. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी? मिल्टन की एलिजी कौन है? एवरीबडी नोज द आंसर एंड दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन सो फार. अभी तक का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये. राइट, एंड अर्चक का आंसर गलत है और उनको अपना आंसर करेक्ट करना पड़ेगा. बाकी सबका आंसर सही है. ये आप नहीं कहेंगे कि मैंने ऑप्शन पढ़ा नहीं था. Right answer to the question is Lycidas. Right, Lycidas is an elegy Milton wrote on the death of his friend Edward King. Edward King. Right? El Allegro means happy man. El Allegro means happy man. Camus is a closet drama, and Paradise Lost
is an epic. Right? Lycidas is an elegy on the death of his friend Edward King. और ये सब का आंसर सही है एक का छोड़ करके. क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following poems by Keats uses the Spenserian stanza? Which of the following poems by Keats uses the Spenserian stanza? Endymion, The Fall of Hyperion, The Eve of St. Agnes, or Lamia? Endymion was his first important publication, and Endymion was written in heroic couplet. And for this poem he was highly criticized, and later he accepted. He confessed that it was a feverish attempt, not a deed accomplished. The Fall of Hyperion was written in Miltonic blank verse. मिल्टन के ब्लैंक वर्स में द फॉल ऑफ हाइपेरियन वाज रिटन एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस वाज रिटन इन स्पेंसिरियन स्टैंजा. ईव ऑफ सेंट एग्नेस वाज रिटन इन स्पेंसिरियन स्टैंजा. राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, एंड आर्चक इज वंस अगेन slightly incorrect. Right? Eve of St. Agnes was written in Spenserian stanza. Question number 32. मैच करना है, मैच करिए. Oliver Goldsmith, John Gay, Samuel Johnson, Richard Sheridan. And in list 2 there are 4 works given. 4 works दिए हुए हैं. Question number 37, sorry 32nd, and you have to match. Samuel Johnson, John Gay, Oliver Goldsmith. John Gay is known for Beggar's Opera. Samuel Johnson wrote the poem The Vanity of Human Wishes. Richard Sheridan is known for his play She Stoops to Conquer, and Goldsmith is known for the novel The Vicar of Wakefield. And अब आप आंसर लगा दीजिए. देखिए क्या है, 1 के साथ सेकंड आएगा. यस. जॉन गे सेकंड के साथ 4th आएगा. सैमुअल जॉनसन थर्ड के साथ क्या आएगा, 1st आएगा. एंड रिचर्ड शेरिडन के साथ 3rd आएगा. द राइट ऑप्शन इज बी. कुछ लोगों ने सी आंसर लगा दिया है ना. राइट आंसर इज बी. Richard Sheridan's play was She Stoops to Conquer. Samuel Johnson's poem was The Vanity of Human Wishes. Oliver Goldsmith's novel was The Vicar of Wakefield. And John Gay's burlesque was The Beggar's Opera. Right answer is B. B for Bengal. Alright. Next question. The term egotistical sublime was coined by. Egotistical sublime was coined by. Right, a typical TGT question.
कुछ गड़बड़ हो गई है क्या इसमें? जी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? गड़बड़ इसमें ये हुआ है ना कि शी स्टूप्स टू कंकर, ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है, एंड द विकर ऑफ वेकफील्ड जहां, ये भी ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है। सॉरी, ये दो वर्क्स ओलिवर गोल्ड स्मिथ के दिए हुए हैं, एक छूट गया था हमसे। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ही नहीं है कि क्लिक किस पर करना है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। यहां पर प्रोसीड कर जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इगोटिस्टिकल सबलाइन was coined by John Keats. Answer is B. Question number 34th. Now you have to make the chronology of the novels. Middlemarch, Daniel Deronda, Felix Holt, The Radical and Romola. Chronology बनाना है. And all the novels were written by George Eliot, and George Eliot wrote total 7 novels. George Eliot wrote total 7 novels. First novel was Adam Bede. Published in 1859. Second novel was The Mill on the Floss. Second novel by George Eliot, The Mill on the Floss, and The Mill on the Floss was written in 1860. Third novel was Silas Marner, और थर्ड तक तो ऑप्शन में दिया नहीं है, Silas Marner in 1861. And then the fourth novel was Romola, 1862, 1863. And then Felix Holt, The Radical, 1866. और फिर उनकी नावल आती है द मिडिल मार्च 1887, सॉरी 1871, 72, एंड फाइनली डैनियल डिरोंडा पब्लिश्ड इन 1876. ये क्रोनोलॉजी है जॉर्ज एलियट के नॉवेल्स की, नोट कर लीजिए और आंसर पर क्लिक कर दीजिए। नोट कर लीजिए कि पहले कौन सी नॉवेल, एडम बीड नंबर 1, सेकेंड द मिल ऑन द फ्लॉस, थर्ड साइलस मार्नर, फोर्थ रमोला, फिफ्थ फेलिक्स हॉल्ट, सिक्स्थ मिडिल मार्च, सेवेंथ डैनियल डेरोंडा. These are the 7 novels by Madam George Eliot, and yes, Romola is a historical novel based on Renaissance Florence. Right? चलो क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना। पहले कौन सा आएगा? Romola, that is fourth, and after Romola third आएगा, right? Fourth, third, first and second. Right option is C. All right, 34th. Question number 35th. Who among the following writers is known for his unforgettable sense of humor and comedy? Unforgettable sense of humor and comedy के लिए किसको जाना जाता है? D.H. लॉरेंस, P.G. वुडहाउस, थॉमस हार्डी, जॉन गॉल्सवर्दी. और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही बता दिया तो समझिए कि आप TGT बन गए. अगर आपने सही आंसर बता दिया तो आप समझ लो कि TGT बन गए हैं. बताइए आंसर. शाबाश, कमान कमान जी. हुडा, हेमलता, अर्चक, सपना, फिरोज, बबीशा, मीरा, मौसमी. वेयर आर अदर्स? TGT मेकिंग क्वेश्चन है ये, कॉपी पेस्ट ना करिएगा दूसरे का.
सुबोध कुमार, मौसमी खातून, मासूम आदिल, ज्योति तिवारी, जूली गौतम, मीरा सागर, रीता राज, धर्मपाल, अर्चक एंड सेट आल्सो यस एग्जैक्टली, रमेश यादव। बस जितने टीजीटी बनने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं का ये क्वेश्चन है। राइट जी बबीशा कोहली, डू नॉट चेंज योर ऑप्शन, डू नॉट चेंज योर ऑप्शन, दिस इज द टीजीटी मेकिंग क्वेश्चन। राइट अब आप समझ लीजिए कितने टीजीटी बन गए हैं। फिरोज खान, संगीता शर्मा, सपना ने आंसर चेंज किया है, इसका मतलब देयर इज सम डाउट। अर्चक, पीजीटी मींस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड टीजीटी मींस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। प्रतिभा उपाध्याय, सोनू भगोतिया, प्रदीप सोलंकी, आंसर चेंज ना करें प्लीज, मुझे सबका आंसर एक तरफ से याद हो जाता है कि पहले किसने दिया था क्या और बाद में दिया है क्या। अविनाश कुमार, यस कमान कमान कमान, सॉरी अविनीश कुमार, मासूम आदि, डू नॉट चेंज योर आंसर, और रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर मेरे क्वेश्चन से ही आप जवाब नहीं समझे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि टीजीटी मेकिंग क्वेश्चन है ना, टीजीटी मेकिंग क्वेश्चन है जी। सपना आपने चेंज किया है, ठीक है, मुझे याद बहुत रहता है, ईश्वर ने इतना तो चीजें बख्शा ही है कि एक बार पढ़ लेता हूं कभी नहीं भूलता, और एक बार पढ़ लू ना अगर उसके बाद आप पूछ लो मुझसे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये वाला डायलॉग इस वाले पेज पे लिखा है कि इस वाले पेज पर लिखा है। डिक्शनरी के वर्ड्स आपको बता दूंगा कि रेक्टो पे लिखा है कि वर्सो पे लिखा है, और इधर वाले साइड पे लिखा कि इधर वाले साइड पे लिखा है। नीचे से कितने वर्ड ऊपर और कितने नीचे इतना याद रहता है मुझे, बहुत तेज दिमाग है, तभी तो देखो सारा आपके सामने बिल्कुल रामायण की कथा की तरह बताता रहता हूं ना। आंसर चेंज किया है, अभी कहिए तो आपको आंसर आपका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं। खैर क्या जिरह करना है इस बात की, नहीं किया है तो नहीं किया है ना। कभी भी अपने टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर टीचर से झूठ बोले तो सजाए मौत के अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन समझे, देखिए हुडा ने लिखा है, मैंने कहा था टीजीटी मेकिंग क्वेश्चन है, एंड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ओनली एक ही राइटर है जो टीजीटी का है, एक ही राइटर है जो टीजीटी का है, और अगर आपने वो भी नहीं समझा तो मेरी कोई गलती नहीं है। राइट आंसर इसका है गॉल्सवर्दी। जिनके आंसर डी है वो आज ही काजू कतली खा सकते हैं और इसी नवरात्रि में मिठाई चढ़ा भी सकते हैं, और जिनका आंसर गलत है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा, उनको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं जिनका सही है बड़े के तीर मार दिए हैं, वो भी बात ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, मेहनत उनको भी करना है, ठीक है। टीजीटी के नाम पर कंफ्यूजन हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, हुई ना कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हुई और आंसर हुआ गलत, और आपका आंसर गलत, इसका मतलब पेपर बनाने वाला हुआ पास, और अगर आपका आंसर सही तो पेपर बनाने वाला हुआ फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an apocalyptic novel? Apocalyptic novel कौन सी नहीं है? Doris Lessing, The Four-Gated City, L.P. Hartley's Facial Justice, Anthony Burgess, The Wanting Seed, and V.S. Naipaul's A House for Mr. विश्वास। कल आपको पहले मिठाई खिला देते हैं, मिठाई चलिए भेज दीजिएगा, देखता हूं, आंसर बता देता हूं, ढूंढिएगा आंसर जा करके। इसका आंसर सी है, एंथनी बर्जेस द वांटिंग सीड। और आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप सर्च करोगे व्हाट इज एन एपोलिप्टिक नॉवेल, व्हाट इज एन एपोलिप्टिक नॉवेल, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट। You will search and drop your answer in the comment box. All right, next question. Identify the author of the following lines. Let sea discoverers to new worlds have gone,
let maps to other worlds and worlds have shown let us possess one world, each hath one and is one. These are the lines from. राइट देखिए इधर आंसर भी लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे. लाइन है द गुड मॉरो की, राइट, द गुड मॉरो की लाइन है. एंड द गुड मॉरो इज द पोएम बाय जॉन डन. गुड मॉरो इज द पोएम बाय जॉन डन. राइट आंसर इज सी. राइट, लेट सी डिस्कवरीज न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन. क्वेश्चन नंबर 38. In the summer of 1712, the Spectator published a series of essays on the pleasures of imagination. On the pleasures of imagination, a series of essays were published in the Spectator. And who wrote the series of essays, The Pleasure of Imagination? और ये वही बंदा है जो इमेजिनेशन को दो पार्ट में बांटता भी है. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस राइटर सेवरल टाइम्स. एंड वन ऑफ माय वीडियोस जो आपके चैनल पर है वो भी प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन पर है. एंड द राइटर ऑफ प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन कौन है? कौन है राइटर ऑफ प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन? है डॉक्टर नहीं, जोसेफ एडिशन. Joseph Edition wrote The Pleasures of Imagination, divided two types of pleasure, primary pleasure and secondary pleasure. Alright, right answer is Joseph Edition. Next question, that is question number 39. Read the following statements and the reason given for it. Choose the right option. Right response. Gulliver's Travels and Jonathan Swift the bad name of being misanthrope. Yes. Jonathan Swift is known as misanthrope as he criticized the human being in his Gulliver's Travels. Right? Gulliver's Travels में human being was belittled. Human being was made क्या बना दिया गया था? Lilliputian. Belittle बना दिया गया था. And in the fourth voice even human being से far better होते हैं वो speaking horses. In the fourth voice to humans वहां पर. Right, so this option is right. And Swift in the novel was neutral to the image of man. In fact, he was neutral to the image of man. Assertion and reason both are correct. Right, both are correct, but R is not the correct explanation. R is not the correct explanation. Rest the two sentences, the statements and assertion are correct. Great Tradition. Great Tradition was a book by F.R. Lewis. And F.R. Lewis picked a few writers, a few previous writers, और उनको great writers बोला है. And he also picked a few writers जिसको उन्होंने शेक्सपियर का descendant बोला है. And who were the writers who belong to the category of great tradition? और वो writer जो है great tradition वाले वो है जेन ऑस्टिन. इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स and Joseph Conrad. These four writers are put into the series of great tradition. So obviously the right answer is this one. James Joyce was not in the list of great tradition.
जेम्स जॉयस ग्रेट ट्रेडिशन की लाइन में नहीं है, राइट। जेम्स जॉयस के जगह पर हेनरी जेम्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 4 राइटर्स के अलावा भी वो बताता है कि देयर आर राइटर्स जो शेक्सपियर के डिसेंडेंट्स हैं, और शेक्सपियर के डिसेंडेंट राइटर्स में है चार्ल्स डिकेंस, Nathaniel Hawthorne, who was an American, Herman Melville, American, Edgar Allan Poe, American, right? They are the successors of William Shakespeare. ये विलियम शेक्सपियर के सक्सेसर्स हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 41, कहां के राइटर है ये पूछ लिया है, और यू माइट हैव हर्ड हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम as he was an American Jewish writer, right? Who amongst the following doesn't belong to the, sorry, कैसे आगे, Isaac Bashevis Singer is an American Jewish writer. Right answer is B. Samuel Beckett's Waiting for Godot has. I have taught you Samuel Beckett Waiting for Godot. Right? कितने acts हैं? 3 acts, 5 acts, 4 acts, 2 acts. ये set qualifying question है अर्चक, if you are still here. Right? Set qualifying question है ये. Waiting for Godot has how many acts? You can change your answer. Waiting for Godot is an absurdist play, right? It is an absurdist play and written by Samuel Beckett, and the subtitle of the play was A Tragic Comedy in 2 Acts. A Tragic Comedy in 2 Acts, ये था play की subtitle. So in how many acts the play Waiting for Godot is? 2 acts. Right answer is D. Waiting for Godot is in 2 acts, and first act का repetition होता है second act. Answer is D. It is absurdist theater, not the Shakespearean play Mira. It has 5 acts. Right answer is D. D for Delhi. Right? There are only 2 acts in the play. Question number 43. James Joyce is an Irish writer, Irish novelist, and Irish dramatist, and he is basically known for his novel Ulysses and Portrait of the Artist as a Young Man. And here there is a question. James Joyce's Exiles is a play. It was a play he wrote for the performance, but the play was rejected by W.B. Yeats. W.B. Yeats ने इस play को reject कर दिया था, and then this play was performed in 1970s by Harold Pinter. Harold Pinter के directorship में ये publish हुआ था. It was a play, right? Joyce himself described the structure of the play as 3 cat and mouse acts. 3 cat and mouse acts में इसको describe किया गया था. So Exiles is a play written by James Joyce. Question number 44. This is the opening line of one of the novels. Once again, very important question for UGCNET and DSSSB, and DSSSB के अलावा EMRS and NVS के लिए भी. The opening line है एक नावल की, and you have to tell the name of the novel. It was a bright cold day, right? It was a bright cold day in April, and the clocks were striking 13. Is the opening sentence of, किसका opening sentence है ये? Bright cold day in April. April is the cruelest month
according to T.S. Eliot. And here he says the month is April, but day was cold as well as bright. Bright cold day in April. And the clocks were striking 13. बज कितना रहा था? 13. और ये ओपनिंग लाइन है किसकी? दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ डिस्टोपिया, और वो डिस्टोपिया है 1984, and 1984 is the novel by जॉर्ज ऑरवेल. जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल है 1984, और ये उसी का आंसर है. राइट, ये उसी की ओपनिंग लाइन है. राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सबटाइटल ऑफ विलियम गॉडविन्स कैलेब विलियम्स. अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था. राइट, सबटाइटल ऑफ विलियम गॉडविन्स कैलेब विलियम्स इज, सबको आंसर इसका पता है. एवरीबडी नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. द सबटाइटल ऑफ विलियम गॉडविन्स नॉवेल कैलेब विलियम्स. पता है ना? बताइए फटाफट आंसर. यार आप तो सारे आंसर मैं ही बताया जा रहा हूं, है ना? आप भी बता रहे हो. बताइए फटाफट. विलियम गॉडविन्स कैलेब विलियम्स सबटाइटल ऑफ द नॉवेल इज. शाबाश. मौसमी खातून, अर्चक गुराय, अजय मिश्रा, हुदय ताहिर, मौसमी खातून, नरेश, धर्मपाल. वेरी गुड, वेरी नाइस. आज आप बहुत फास्ट किए हैं क्वेश्चंस ना. देखिए आज 1.5 आवर में ही यू आर just 5 questions away. Right answer to the question is things as they are. कैलेब विलियम्स की सब टाइटल है Things as they are. इसका आंसर है सी. Who among the following feminists belong to the category of radical feminist? रैडिकल फेमिनिस्ट किसको कहा जाता है? यह भी कई बार क्वेश्चन आपको बता चुका हूं. मेनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड दिस आंसर. शाबाश नेहा, वेरी गुड. Simone de Beauvoir was not a radical feminist, Archak. She was a traditional feminist. She is known for her book The Second Sex, and in The Second Sex she describes that gender is a social phenomenon while sex is a biological phenomenon. Gender social phenomenon होता है, sex is biological, and a woman is constructed, not born. This is the thesis of Simone de Beauvoir in Second Sex. Who is known as radical feminist? Radical feminist is Helen Cizou. Helen Cizou is the radical feminist. This is the right answer, A. Question number 47. ये सबका आंसर सही होगा. On the knocking at the gate of Macbeth. On the knocking at the gate of Macbeth is a longer essay by G. Wilson Knight, A.C. Bradley, Thomas De Quincey, F.R. Lewis, who wrote the longer essay on the knocking at the gate in Macbeth. On the knocking at the gate in Macbeth, this is a longer essay by Thomas De Quincey. Everybody knows the answer to this question, no doubt. Right? Once again, Archak has incorrected the answer. Thomas De Quincey's answer. Thomas De Quincey wrote the On the Knocking at the Gate. Now, figure up this page. The expression dreaming house is an example of. Dreaming house is an example of. Come on, come on. Dreaming house is an example of zeugma,
transferred epithet, chiasmus or apostrophe? Question number 48. Very fast. Yes, Uda, absolutely. Dreaming house is the example of. Question number 48. Shabash, well done, well done. Everyone, shabash. कुछ बताने की जरूरत नहीं हमें. You are intelligent enough. Now you are in the position to crack your examination. The example, dreaming house is the example of transferred epithet. Transferred epithet का example है. ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है ड्रीमिंग हाउस, स्लीपलेस नाइट, राइट इंटरेस्टिंग मैच, बोरिंग नॉवेल, बोरिंग मूवी. ये सब ट्रांसफर्ड एपिथेट के एग्जाम्पल्स हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. एवरीबॉडी हैज आंसर्ड करेक्टली. 49th. The term practical criticism was coined by. Practical criticism is a term, and in fact it was a book. And who wrote the book Practical Criticism? किसकी बुक है Practical Criticism? Who coined the phrase? William Emerson, W.K. Wimsatt Jr., I.A. Richards, F.R. Lewis. Who coined the phrase Practical Criticism? अजय मिश्रा, मौसमी शबूत, नरेश निरंकार मिश्रा, हुदा ताहिर, फिरोज, आर्चिक, सुरेश, सोनू, धर्मपाल, I.A. Richards and T.S. Eliot. These two were the pioneers of new criticism. And the book Practical Criticism, Principles of Literary Criticism and 4 Types of Meanings, ये सब concepts I.A. Richards के हैं. I.A. Richards का एक और concept है. He talks about 2 uses of language, emotive use of language and scientific use of language. The book Practical Criticism was written by I.A. Richards. So right answer is C. Right answer is C. The book was written by I.A. Richards. And once again here, name of a theoretician is given and the name is Victor Shklovsky. Victor Shklovsky's name is associated with. Victor Shklovsky का नाम associated किससे था? ये आंसर बताना है अर्चक को, because she is preparing for set examination. Postmodernism, New Historicism, Reader Response Theory, Russian Formalism. थोड़ा सा भी अगर आप अवेयर हैं तो आप करेक्ट आंसर पर क्लिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 50. टुडेज लास्ट क्वेश्चन. इतना जल्दी गुड नाइट? जाओ भाई, जाइए जाइए, जल्दी जाइए. गुड नाइट. समवन मस्ट बी वेटिंग फॉर यू. विक्टर श्लोस्की इज अ रशियन नेम. रशियन नहीं लग रहा है आपको? एंड ही बिलोंग्ड टू रशियन फॉर्मलिज्म. रशियन फॉर्मलिज्म से बिलोंग करते हैं. Right answer to the question is D. All right, ये थी आज की आपकी क्लास. अब आपसे कुछ बातें करता हूं. कैसी लगी आज की आपकी क्लास और क्या फीडबैक है आपका? फटाफट फीडबैक दे दीजिए, फिर आपको बताता हूं मैं. फटाफट प्लीज गिव योर फीडबैक. आज का क्वेश्चन पेपर कैसा था पहले तो ये बताइए. How was today's paper? How did you solve? And how much questions आपने correct? How many questions have you corrected in the first go? कितने question आपने first go में clear किए हैं? ये सारी चीजें आपको बताना है. And once you have completed all the questions, then I am going to tell you कि today you have done a paper of UGCNET. Second paper था ये 2011 का दिसंबर. 2011 दिसंबर का सेकेंड पेपर
today you have solved, right? Today you have solved the second paper of UGCNET English December 2011. और अगर आपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, it means net is not very far away from you. If the session was mind blowing, if the session was wonderful, if the session was useful, if the session was fabulous, right, as usual, as nice, right, मेरे लिए माइंड के बाहर थे many questions, right. चलो, some new questions were for me, but ज्यादा कर नहीं पाए, कोई नहीं. ये यूजीसी नेट का पेपर था. यू हैव टू जज योरसेल्फ, यू हैव टू एस्टिमेट योर पोटेंशियल. और देखिए, कहने के लिए तो नेट का पेपर था, बट हियर क्वेश्चंस कैसे कैसे थे. आपके टीजीटी के क्वेश्चंस, पीजीटी के क्वेश्चंस, एनवीएस के क्वेश्चंस और ईएमआरएस के क्वेश्चंस, सेट के क्वेश्चंस और नेट के क्वेश्चंस. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट तो सारा कुछ उसी के अंदर आ जाता है. इट्स जस्ट लाइक अ बनियन ट्री, और उस बनियन ट्री के नीचे नेट इज अ बनियन ट्री, एंड अंडर द बनियन ट्री ऑल द एग्जामिनेशंस फ्लरिश. सब उसके अंदर आते हैं. आई होप कि आपको मजा आया होगा. और हाँ, जिस दिन नेट का क्वेश्चन लाता हूं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भागते हैं कि रहते हैं. अगर आप रहते हैं अंत तक तो निश्चित कुछ सीख करके जाते हैं. मेरा काम है सिखाना, मैं अपना काम करता हूं. आपका काम है सीखना. आप कितनी तन्मयता से, कितनी एक्साइटेड होकर के, कितना इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग एंड दिस इज माय वे ऑफ सेइंग. ऑल द बेस्ट, गुड लक. मिलते हैं टुमारो विद अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, न्यू आंसर्स, न्यू एक्सप्लेनेशंस. बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.